Hi students, we will continue the lesson number 6, weather and climate. We have learned the elements of weather and climate. In that we have learned the atmospheric temperature, atmospheric pressure and winds we have learned. Today we are going to learn moisture. What is that? Moisture means the atmosphere always contains water vapor or moisture in the lower layer. What moisture means? Water vapor. Okay. So this moisture exists in three forms: solid, liquid and gas. The ice caps in the polar regions, the waters in the oceans and the rivers and the water vapor present in the atmosphere make all the three forms of water. Earlier you have learned the three forms of water: solid, liquid and gas, is it? So what is that? The moisture exists in three forms. In these three forms the moisture exists. Okay. So solid, the ice gaps in the polar region, we can say that is solid form of water. Then liquid, the oceans and rivers, where that we can see the water in the oceans and rivers, and the water vapor present in the atmosphere makes, that is the form of gas. Okay. So next we will learn about the evaporation. What do you mean by evaporation? When water evaporates from land and other water bodies, it changes into water vapor, which is the most important form of moisture. What is the meaning of moisture? Means wetness caused by water. Moisture means, you know that moisture means a skin is moisture. It's like we can say that now. So wetness caused by water. Water से wet होता है, उसको हम लोग moisture कहते हैं. Okay. So evaporation means that already you have learned in the previous classes and small classes you have learned. When water evaporates from land and other water bodies से evaporate होता है, then it changes into water vapor. क्या हो सकता है? Water vapor हो सकता है, which is the most important form of moisture in the atmosphere. Water vapor है moisture, important form of moisture. Then water can change from one form to another by absorbing or giving out heat. कैसे है? वाटर का फॉर्म चेंज होता है, कभी कभी अब्सॉर्व करता है, वो हीट को अब्सॉर्व करते हैं, नहीं तो हीट को आउट कर सकता है, उसके अनुसार वाटर का फॉर्म चेंज होता है. ओके. समटाइम्स हीट अब्सॉर्व करने के टाइम से वो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए हीट आउट करने के टाइम क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है. ओके, दैट्स ऑल. द रेट ऑफ इवापोरेशन इज द हाईएस्ट ऑन ए हॉट and windy and dry day and the lowest on a cold, calm and wet day. We can say that the rate of evaporation is the highest on a hot, windy and dry day. Hot or windy day or dry day evaporation highest होता है, लेकिन lowest कब होता है? कोल्ड, काम एंड वेट डे. वेट डे नहीं तो कोल्ड डे, नहीं तो काम डे में ऐसे इवापोरेशन लो होता है. ओके. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द ह्यूमिडिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर कितना है उसका अमाउंट के अनुसार हम लोग ह्यूमिडिटी भी बोलता है. देन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस इन विंटर एंड इंक्रीजेस इन समर एंड रेनी सीजन. ह्यूमिडिटी डिक्रीज होता है, लेस होता है विंटर सीजन में, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है समर में और रेनी सीजन में. ओके. When it is hot, we sweat and when this sweat evaporates, we feel cool. When it is hot, hot हो जाने के टाइम हम लोग sweat होता है, उसके बाद the sweat evaporates, we feel cool. ये sweat evaporate करेंगे तो ये हम लोग को क्या फील होता है? Means cool feel भी आता है. Okay. Then we learn about the condensation. What is the meaning of condensation? As the moist air rises up, it becomes cool and the water vapor changes into small drops of water. This process is known as condensation. You know that as the moisture means wetness in the caused by water. Water से वो wet होता है. So moist air rises up, वो ऊपर जाएगा, it becomes cool हो जाएगा. उसके बाद water vapor changes into, वो cool होने के टाइम water vapor change हो जाएगा. सो कौन सा फॉर्म में चेंज होता है? ड्यू होता है, फॉग होता है, नहीं तो फ्रोस्ट एंड क्लाउड्स सब होगा. वाटर वेपर चेंज कर मीन्स डिफरेंट फॉर्म बन जाता है, उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं. अंडरस्टूड? So these forms once we discuss. First one is clouds. What is that? When small drops of water condense around dust or smoke particles in the air,
क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. क्लाउड्स से कैसे फॉर्म हो जाता है? व्हेन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंडेंस अराउंड डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स. स्मोक पार्टिकल से नहीं तो डस्ट से मिंगल होकर कंडेंस होकर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन जाता है. उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो मिक्स हो जाएगा, उसको क्लाउड्स बन जाता है. देन clouds are of various types. The various types of clouds are there, such as cirrus, that means feather white, then cumulus, then nimbus. These and stratus. These are the different types of clouds. Then next one is dew. Now we are learning about the different forms of condensation. Clouds, dew, fog and mist, then frost. This and all that. Okay. So next one, dew. What is the meaning of dew? In winters, when moist air comes in contact with the cold ground surface, moist air, that means वो wetness होता है, वो नीचे आएगा. Then water vapor changes into water and rust as dew drops on leaves and grasses. हम लोग winter time में देखते हैं grass का ऊपर. Can you see the picture? स्मॉल मीन्स ऐसे ड्रॉपलेट वाटर होता है, उसको हम लोग क्या होता है? ड्यू. ओके. द नेक्स्ट वन, फॉग एंड मिस्ट. दिस ऑल्सो यू हैव हर्ड. ड्यूरिंग विंटर मंथ्स द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर कंडेंसेस अराउंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर एंड फॉर्म्स फॉग एंड मिस्ट. ओके. वाटर वेपर एयर डस्ट पार्टिकल से साथ मिक्स हो जाएगा, उसके बाद एटमॉस्फेयर, उसके बाद फॉग बन जाता है. ओके. दिस नॉर्मली ओकोर्स इन द मॉर्निंग एंड रिड्यूसेस विजिबिलिटी. ओके. मॉर्निंग में हम लोग देख सकते हैं. देन नेक्स्ट वी कैन से फ्रोस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रोस्ट? फ्रोस्ट मीन्स ड्यूरिंग कोल्ड वेदर के टाइम में when the atmosphere temperature falls below freezing point, the water vapor converts into ice crystals and covers the grass and plants. Have you ever seen that? Cold weather time temperature freeze होकर below the freezing point में आकर water vapor convert हो जाता है, ice crystals हो जाता है, नहीं तो उसके आइस क्रिस्टल हो जाकर वो ग्रास को ऊपर आता है, उसको हम लोग फ्रोस्ट कहते हैं. ओके. देन वी लर्न अबाउट द प्रेसिपिटेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन? Clouds have millions of tiny water droplets. When these droplets of water join together, they grow in size and are unable to float in the air. What is that? Millions of clouds means we can see in the sky, isn't it? Clouds are there. Clouds means the millions of water tiny small water droplets are there, and these droplets are together एक ही साथ होकर they grow in size means बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. Then what happen? बड़ा होने के बाद unable to float in the air. Float नहीं होता है, एयर में फ्लो नहीं होगा. देन दे फॉल ऑन द अर्थ सरफेस एज ड्रेन ड्रॉप्स. ऐसे दे कांट मूव हियर एंड देयर, दे कांट फ्लो ओवर हियर एंड देयर, सो इट इज कम्स लाइक द ड्रेन ड्रॉप्स. सरफेस में, अर्थ सरफेस में आता है, रेन ड्रॉप्स जैसे आता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्रेसिपिटेशन? रेन नीचे प्रेसिपिटेशन का ज्यादा होता है, रेन होगा, स्नो, स्लेट एंड हेल स्टोन्स आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. Precipitation means rain है, we can say that, or sleet, we can say snow. इसको सब हम लोग precipitation कहते हैं. I think everybody understood. So in that, the rain is the most important form of precipitation. Which is the most important form of precipitation? Rain. Okay. So now we learn about if rain water is not enough, then drought and famine may hit us at it. And if it is too much, flood may wreck our lives. Then rain is the most important one, and we learn about the rain. What is the rainfall? Is of 3 types. Rainfall 3 types का होता है. Rain is the most important form of precipitation. And what are the type of rainfall? So first one is conventional rainfall, and relief rainfall, and rainfall and cyclonic rainfall. Like 3 types rainfalls are there. First one is conventional rainfall. That is when air comes in contact with the earth's hot surface, it gets heated and rises up in the form of an air current. So you know that when air comes in contact with the earth hot surface, means air नीचे आते हैं और earth का surface में mix means touch हो जाता है,
then heated it gets which air heated and rises up in the form of an air current. वो ऊपर heat होने के time ऊपर हो जाता है. Then when cool air comes in to take the place of hot air, cool air आकर hot place में touch करने के तो conventional air currents are formed. Conventional air होता है. In the upper layers of the atmosphere, this warm air cools down. Upper layer of the atmosphere का ऊपर जाते जाते ये क्या हो जाएगा, cool हो जाएगा. Then condensation occurs and clouds are formed. कूल होने के टाइम में कंडेंसेशन occur और clouds are formed. कंडेंसेशन हो जाता है उसके बाद cloud form हो जाता है. Then these clouds produce sudden and heavy rainfall accompanied by thunder and lightning. This kind of rain is experienced in equatorial and tropical regions every day. This usually takes place in the afternoon. You have experienced that. Sometimes we can see in the afternoon time thundering and lightning, isn't it? Because of the hot, isn't it? बहुत ज़्यादा hot होने के time हॉट आने के टाइम क्या होता है, हीट ज्यादा होगा, ये एयर राइसेस ऊपर राइसेस होता है, उसके बाद कूल कर क्लाउड्स फॉर्म, कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड फॉर्म हो जाता है, उसके बाद सडन रेन हो जाता है. उसको जल्दी मीन्स मेनली इन द ट्रॉपिकल एरियाज, मीन्स वहाँ ज्यादा हॉट रहता है उधर ही होता है ये कन्वेंशनल रेनफॉल. नेक्स्ट वन वी सी दैट वी कैन अंडरस्टैंड रिलीफ रेनफॉल. Relief rainfall occurs when a mountain lies in the path of moist wind. This is also called orographic rainfall. The other name of relief rainfall is orographic rainfall. This occurs when mountain lies in the path of moist wind. Moist wind का टाइम मीन्स माउंटेन का वो पाथ में moist wind आता है, उस जगह पर relief rainfall होता है. So the orography, what is the meaning of orography? Orography means formation and relief of religious elevated terrain. Means elevated means high area में ये ज़्यादातर होता है. So the warm moist air is forced. The warm moist air is forced to rise along the barrier with the result that its temperature falls. This result in the condensation and heavy downpour. So can you see the picture of this? See these are mountains. There's the colds and condenses. Cold occur, condense हो जाता है. Then next we can say the air rises होता है. Then warm moist wind आता है. So which side में, कौन सा साइड में है विंड आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंडवार्ड कहता है. कौन सा साइड में विंड आता है, मीन्स माउंटेन का बोथ साइड्स आर देयर. समटाइम्स फ्रॉम दिस साइड द विंड ब्लोस, सो इट इज कॉल्ड विंडवार्ड. ओके, देन we can say rainfall take place only in the windward side. Okay, rainfall कहाँ होता है, जब windward side में होता है. rainfall इधर से होता है, जब windward wind कहाँ से आता है उस साइड में rainfall भी होता है. So the other side of the mountain known as the leeward. The other side, sometimes from this side wind blows and sometimes this wind blows. So this side is known as windward, and from here it is wind coming, then it is known as windward side, and this side is known as leeward side. What is that? Leeward. So leeward side receives little or less rainfall. That is little or no rainfall. Leeward side में हम लोग बोल सकते हैं rainfall नहीं होता है, कभी कभी little होता है. Okay. This area is known as rain shadow area. Leeward side known as rain shadow area. Rain नहीं मिलता है, rain को shadow होता है. So that, okay. I hope everybody understood. Next rainfall is cyclonic rainfall. 3 type of rainfalls are there. Conventional rainfall. Conventional rainfall means sudden rainfall, is it? That is in the equatorial areas and all. The another thing is, another rainfall is relief rainfall. These are happening in the mountain areas. Highlighted area means elevated areas, means ज़्यादा height होता है उस area में होता है. So in that you have to remember windward and leeward. Windward and leeward is there. And the next rainfall is cyclonic rainfall. This type of rainfall is associated with cyclones. In a cyclone, when warm and cold air from opposite directions meet, cold and warm air, opposite direction. This is cold air and this is warm air. It means opposite direction meet. A zone of separation called front means zone of separation called means separate होता है. Then forms and the place where they meet. वो
जहाँ वो मीट हो जाता है वो जगह पर हम लोग क्या एक सेपरेशन होता है, उसको फ्रंट कहता है, फ्रंट बोलता है. एंड द प्लेस वेयर दे मीट, वार्म एयर बीइंग लाइटर राइसेस ओब्लिक्वली ओवर द हेवी कोल्ड एयर. वार्म एयर क्या होता है, लाइटर होता है. सो इसको ऊपर से हेवी कोल्ड एयर का ऊपर से ब्लो होता है. as it rises it cools down, ऊपर जाता है तो ये कूल हो जाता है, मीन्स ठंडा हो जाएगा. देन इट कूल्स डाउन, कंडेंसेस एंड कोस रेनफॉल. कूल होने के टाइम क्या होता है, रेन होता है. ओके, सो रेनफॉल अलोंग द पाथ ऑफ साइक्लोन. दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रंटल रेनफॉल. दिस साइक्लोनिक रेनफॉल ऑल्सो नोन एज फ्रंटल रेनफॉल. इट इज क्वाइट कॉमन इन द बेल्ट ऑफ द वेस्टर्न आइस, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन. विंटर सीजन में ये हैपनिंग होता है. ओके children, today we have learned about the moisture. In moisture we have learned the what is that, evaporation is the main thing. Evaporation, condensation and precipitation, isn't it? And it is forming according to that the three forms of water is there. What is that, three forms of moistures are there, solid, liquid and gases, is it? So in that different forms are there. Condensation different forms are there, evaporation different form is there, and precipitation also different forms are there. Today we have learned this. Children, the 2-3 classes I have taken to complete this lesson, so you have to read after each class. I hope everybody read that, but today also you have to read 2-3 times and understand all the topics. And then I will send you the exercises also. Okay, thank you children, bye bye.